Hello everyone, welcome back. So, let's talk about the market. Today, the market is down by 963 points. That is, Nifty is down by 963 points. Sensex down by 2985 almost. So, about to reach minus 3000. Now, very interesting observations in Nifty and also in one of the stock, which is Siemens, which corrected almost by 40 to 50% today itself. Now, what is the big reason behind this? So let's try to decode this. Let's talk about Nifty first and let's try to know about what's going around. So, किसी भी स्टॉक को या इंडाइसेस को हम पहले बड़े टाइम फ्रेम पे समझते हैं so as to understand the complete picture what is right or wrong with that particular indices or stock. अब जरा क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहां से सेलिंग का प्रेशर दबदबा निफ्टी के अंदर बना रहा अपने ऑल टाइम से सप्लाई जोन बनाते हुए निफ्टी आज इतने क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में बैठा हुआ है एंड आज से ही नहीं कंप्लीट क्वार्टर की बात करें हम अगर तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ के लेवल पर है जो काफी दूर लगता है और हम नहीं चाहते कि यहाँ तक आए बट हमारे चाहने या ना चाहने से होता ही क्या है मार्केट के अंदर सो एज ऑफ नाउ निफ्टी इज इन द क्वार्टरली टाइम फ्रेम और क्वार्टरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट हम देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी बैक टू बैक सप्लाई जोन बनते हुए नजर आ रहे हैं बिकवाली चालू है और मंथली टाइम फ्रेम पर कोई ऐसा खास सपोर्ट हमें नहीं दिखता है बिकॉज दिस कैंडल अगेन इज अ बेस कैंडल काफी सारी सेलिंग हुई है यहाँ पर अगेन यहाँ पर भी काफी सारी सेलिंग हुई है तो प्राइस काफी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में आगे बढ़ी है इस लेवल से तो देखते हैं कि अगर ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम रोक ले तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो मंथली टाइम फ्रेम का तो आज कोई दबदबा नजर नहीं आता तो ये चल रहा है निफ्टी के अंदर अब अगर आप मेरे साथ में कोई क्विक टिप लेने के लिए जुड़े हैं तो शायद this could be a wrong place for you because we are here to understand the stock movements on the basis of the demand and supply theory and what better can be an opportunity to study in the live market. तो चलते हैं हम स्टॉक की ओर जहां सीमेंस इंडिया के अंदर आपको एक 40 टू 50% का करेक्शन आज की ही तारीख में नजर आया अगर ग्लोबल लेवल पे न्यूज देखनी है तो ये समझें कि ग्लोबल लेवल पर स्टॉक में सीमेंस एनर्जी इंडिया ने रिसेंटली डिमर्जर अनाउंस किया और उसी के चलते नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड पर आए अब क्या सबसे पहले ये न्यूज कंपनी के इनसाइडर्स के लिए नहीं थी नहीं पीपल इन द कंपनी माइट बी अवेयर ऑफ कि हाँ कंपनी में ये कोई स्ट्रेटेजिक चेंजेस होने वाले हैं और उसी के चलते वन ऑफ द डे 26 ऑफ मार्च के दिन स्टॉक की प्राइसेस में 7% का इजाफा नजर आया वेर इन एनसीएलटी नोट फॉर एनर्जी बिजनेस डीमर्जर राइट और काफी जोर जोर से शोरगुल मचा कि चलो इस स्टॉक को बाय करें बिकॉज यहाँ तो 7% का करेक्शन हो चुका है जूम हो चुका है और काफी पॉजिटिव है बस बिजनेस डीमर्जर हो जाएगा तो इट लुक्स ग्रेट साइन एंड विद दिस टुडे इट्सेल्फ 7th of April, we could see that the Siemens Energy India announces new board of directors. And with this 50% downfall, as the market opened, the stock got corrected. Now, let's try to understand the bigger picture. And for that, we'll get into the technicals of the company first of all. So, there is no recommendation as of now to buy or sell because this channel is not for the sake of recommendation, but for the sake of educating you on the price action so that you can take wise decisions and be mindful on that. So let's try to understand this. किसी भी स्टॉक को हम बड़े टाइम फ्रेम से स्कैन करना स्टार्ट करते हैं सो एज टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द बिगर पिक्चर एंड हियर वी गो एट द हाफ ईयरली टाइम फ्रेम एट द हाफ ईयरली टाइम फ्रेम वी कैन सी दैट देयर इज अ ह्यूज सेलिंग प्रेशर इस लेवल से 8,400 के लेवल से आप इस स्टॉक में एक बिकवाली का दबाव देख सकते हैं आज की तारीख में 2940 रुपए पे ये स्टॉक आ गया है ऑलमोस्ट 75% करेक्शन द स्टॉक प्राइस विद दिस सम पीपल माइट बी थिंकिंग कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है चलो लेट्स गो एंड बाय द स्टॉक नो वेट गिरते हुए चक्कर को कभी पकड़ोगे आप नहीं ना
So when there is fall in the market, you are not supposed to hold any of such downfalls. So let's get started. क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर भी बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस में सेलिंग प्रेशर है। बैक टू बैक सप्लाई जोन बनते बनते प्राइस आज इस लेवल पर आ गई। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर जब यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट चालू हुआ तो बहुत ही प्यारी यहाँ पर आप एक्सप्लोसिव मूव देख सकते हैं। बट इस एक्सप्लोसिव मूव के अंदर आप ये रेड कैंडल को इग्नोर नहीं कर सकते, जो बहुत ही क्लियरली बता रही कि भले ही बायर्स कितने ही स्ट्रांग हैं, प्राइस को अप लेके जा रहे हैं, बट एक रेड कैंडल ने प्रूव कर दिया है कि हाँ, सेलिंग आप में कभी भी आ सकती है स्टॉक को लेकर। और वहीं पर इस लेवल पर जाकर सेलर्स हावी हो गए और उन्होंने बैक टू बैक सभी डिमांड जोन को यहाँ पर तोड़ना स्टार्ट किया। और ये लेवल जो कि बहुत ही स्ट्रांग था वो भी सस्टेन नहीं कर पाया सेलिंग प्रेशर के आगे, और प्राइस आज अपने हाफ ईयरली टाइम फ्रेम को टच कर चुकी है। जब इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम से आ रहा हो तो why you will buy at current market price? That's my question to you. Okay, so I'm posing this question to you that why you need to buy just by looking at 45 to 50% of correction? But मुझे लगता है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो बहुत ही पिटाई हुई है स्टॉक की। Again, one green candle shows that yes, there could be buying pressure, but the buying pressure couldn't sustain here. ये buying pressure आया था क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के कारण, जो कि बच नहीं सका, और प्राइस ने अपने सभी डिमांड जोन्स को ब्रेक कर दिया है। सप्लाई जोन इतना, सप्लाई सेलिंग प्रेशर इतना पॉजिटिव है, इतना हाई है कि यहाँ तक भी कुछ भी नहीं बचा पाया। तो अब मंथली टाइम फ्रेम पर मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ही ये मंथली का डिमांड जोन इस डाउनफॉल को रोक पाएगा, क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशंस है। इसके बाद में बाइंग में कोई अच्छा खासा इजाफा नहीं देखने को मिला है। प्राइस काफी मशरत करते हुए आगे बढ़ी है। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जब प्राइस बढ़ी है, आगे कोई एक्सक्लूसिव मूव नहीं दिखता। So how you can see that Siemens is going to have great monthly demand zone ka support here. I could see that complete garbage is here nearby in this particular area. So doesn't looks like a good option as of now to buy. चलते हैं हम स्टॉक के टेक्निकल्स के बाद में फंडामेंटल्स की और समझते हैं कि स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Market capitalization has been reduced significantly because of the recent changes in the stock value. So it's driven by the current market price and it's 98,717 as of now. But when we compare this company with the peers, the company stands like among the top BSE 100 companies. And with this, it is giving a good competition to Hitachi, Wari, Suzlon, and so on, ABB, and so on, so far. With this, let's try to understand what happened in the fundamentals over a period of time. Let's look in the profit and loss statement. The profits number are not significant to me exactly. 1860, 2487, 31104, 2515. So range bound consolidated. Sales number again 19 से 22, 22 से 18। ये कोई नंबर्स होते हैं भला? Just 2000 plus 2000 minus doesn't shows consistency in performance. When we talk about the net profits again, range bound 2700, 2800 and so on so far. Decent payout, ठीक है। डिविडेंड से हमें क्या पड़ी है जब हम लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन और ग्रोथ की बात करते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट बताती है रिजर्व्स again 2000 plus because the profits are just increasing 2000 crores year by year basis. When we talk about the fixed assets, again not so great increase. So balance sheet okay. Cash flow statement, again three major activities: operating, investing and financing. Surprisingly
कुछ ग्रेट नहीं हुआ है इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में भी, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी मेंटेन किया है इस लेवल को, दैट्स ऑल। नाउ विद दिस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर इस कंपनी के स्टॉक में पिछले 6 महीने से या साल भर से हम सेलिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नंबर्स काफी है बताने के लिए कि सेलिंग तो आनी ही आनी है। Apart from that, when I talk about investors, 75% is being held by the promoters. Demerger के बाद में कैसे क्या structuring रहेगी, still there is a lot of confusion around that. And with this, when I go to the next part which is the debt equity ratio, decent. But क्या ही करूँ अगर मैं profitability नहीं देख पा रही हूँ, मैं growth नहीं देख पा रही हूँ, मैं stability नहीं देख पा रही हूँ, मैं cash flow नहीं देख पा रही हूँ कंपनी के अंदर, तो that's completely okay if debt equity ratio is just 0.02. Doesn't make difference to my analysis. Return on capital employed, return on equity looks decent, but the stock is under major correction, and which we just saw today, almost 40 to 50% of downfall in single day speaks a lot beyond the numbers of the financials or the fundamentals. And we can confirm all this by looking to the technicals of the company that yes, यहाँ पर अभी कोई ऐसा लेवल ऑफ रिकवरी या सपोर्ट नहीं दिखता है मंथली टाइम फ्रेम पर भी मुझे पर्सनली। सो आई होप यू लर्न अ लॉट विथ रिगार्ड टू नॉट टू not to catch falling knife when the markets are not doing great. Even if it is a 40 to 50% of correction, look at the bigger picture. And the bigger picture says that there could be some more corrections because market is completely driven by the demand and supply, and not on the basis of any projections or estimations or like things like that. So with this, I hope you learned a lot from this. And always, to summarize, when you buy any stock, you need to understand how the price has acted or reacted from a higher time frame. यहाँ पर हमने हाफ ईयरली टाइम फ्रेम को समझा, हमने क्वार्टरली टाइम फ्रेम को समझा, हमने मंथली टाइम फ्रेम पर समझा, राइट। और उसके बाद में हम मंथली टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं कि ठीक है, प्राइस में डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में ही बाइंग हुई है, कोई ग्रेट अचीवमेंट मंथली टाइम फ्रेम पर नहीं दिखता है। जब ये वाला लेवल भी सस्टेन नहीं कर पाया, तो इस लेवल की क्या मजाल की ये सस्टेन कर पाए। अगेन दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। So signing off, I hope you learned a lot from this video. Do comment in the comment box what's your key takeaway and what's the next video which you are looking forward for. Nifty का भी हमने एक quick overview लिया है. I hope you learned a lot with regard to that part also. So see you soon in the next video. Bye bye.